A very good evening, Samanika. We are really, really glad to have you over here. On behalf of the Calcuttan lawyers, I welcome you to our uh, chat show today. This will be a very, very, very casual session over where I'll talk to you regarding the problems nowadays lawyers are facing, especially the ones who are who have completed their law degree right now in amidst this situation of pandemic. So getting into all those serious things, I'd just like to start up with a very, very casual thing. I would just like to ask you the very casual question which you have been hearing many times. That is, when people ask you who is Manika, what do you answer? Like, who are you? Oh, very interesting, actually. That's exactly what I prepare most of my mentees for when they come Okay. to me and they say they have a job interview. And I say the first question somebody is going to ask you is tell me something about yourself. But honestly, for the podcast session, I wasn't expecting this to be the conversation starter. But I'll take it as my mock interview then, impromptu mock interview, maybe we'll call it. Who is Samanika? Great, very nice. Samanika is a small town girl from Dehradun, Uttarakhand, India, who pursued law, and she was always interested in numbers and all. And therefore, like in my school days, when I was in 10th, 11th standard, somewhere in some newspaper on some Sunday evening, I read a position called CEO, and it was written that this is the highest position. Like the CEO is the owner of the business, the head person. Yes, So yes. we were just having a discussion amongst our friends that what all career options should we choose and what subjects, science, commerce, humanities, and all ka pura discussion was going on. Hmm. And that was when it clicked me that everybody is working for a similar number of hours, 8 to 10 Hmm. hours a day, and then Hmm. somebody is making, let's say, 5K or 10K, and at the Hmm. same time we have Ambanis and maybe Tatas who are making Hmm. a lot more. Then they are actually making in 7 to 10 digits. So I thought कि ऐसा क्या करते हैं? And then that was when I came across this newspaper का clipping where it was said the CEO is the position. So my teacher asked me one day during my physics class that what do you want to do? And my very impromptu answer was मुझे Cadbury का CEO बनना है. Very very Ah. specific. So even my teacher started laughing. Anyway, so that's why I liked playing with numbers, and therefore I thought कि maybe corporate law would be something I would want to do. So I graduated in law from NUJS Calcutta. After that, I did a corporate job for a very brief amount of time in Bombay. And meanwhile, I was always inclined towards armed forces. Coming from a Pahadi family, so I have this common joke I crack everywhere कि जैसे बिहार के लिए यूपीएससी वैसे ही उत्तराखंड के लिए फौज होती है. That every family would have at least one person either aspiring or already serving. So therefore, the Fauj wala Kida was there Hmm. within my mind since college days, and this was also the reason I did not sit for my day zero campus placement. So Okay. then I left my law firm job to try my luck for Armed Force SSBs, but initially I couldn't clear it, and that was the time when I got a job offer from Lawseco. So coming back to your question, who's Samanika? Hmm. Samanika is a girl from Dehradun, North India, who has different interests, very much inclined towards armed forces, but also has entrepreneurial uh, interests. And in the free time, I prefer networking, communicating, and learning new things. So, yeah. Okay, okay. That was such an interesting answer from your side. That was really good. I mean, the interest in armed forces, stating the fact where you stay, and you have seen since your childhood that everyone is inclined towards something or the other related to the army. That's a really good thing. That's a really good thing because as lawyers, we don't really think about going into the army or being someone from the army or representing the army. That's a very different thing from on our part, on our mind. This is a Yeah. really new purview we got today. That's a really good thing for our viewers and listeners, for today's special Yeah, because listeners. when I was also studying at NUJS, so whenever I Yes. used to talk about defense, Hmm. and maybe like maybe in the East it is not actually as much, people are not aware Hmm. and Hmm. Hmm. sensitized or Hmm. inclined towards forces as they are Hmm. in the North.
because north Hmm. में तो we have our Garhwal regiment and Kumaon regiment in Yes, army, yes, and like yes. you will find, like I said, so इसीलिए even in my college, and since it was a NLU, again Hmm. people used to like give me a very surprising expression whenever I used to even mention about forces. Hmm. Like मुझे भी लगता था कि am I in the wrong place or something, Hmm. but over a period of time I had been talking about it everywhere I went. I Hmm. was taking this thing with me. So when Hmm. I left my law firm job, my partners actually told me that we always knew that you would be one day telling us the same thing, that अब हो गया मेरा corporate का, and now I really want to join the forces. Okay, so I'll get back to this army thing a bit later. Let's just continue with a casual conversation. Yeah, that's a very Yeah, serious thing. I'll get back to it. I mean, our yeah, viewers, our listeners, our whole target audience, they need to know about this, that there is a different line from in which you can go if you, even if when you are a lawyer. Because when you say yeah, army, people think you have to go to fight, you have to be a doctor to serve the army and everything. But being a lawyer, how can you serve the Indian Armed Forces or anything regarding the army? That's a really good thing. So we'll get back to yeah. that later. So starting with a very casual conversation. So what type of a student were you in school and in college? Like, were you the first benchers and a very serious one, or were you the backbenchers, or were Very you a balanced middle bencher? very interesting question. And in ever, if ever somebody from my school life or college life ever tunes into this podcast, they'll actually laugh at this question because I was a completely different person altogether. Like Hmm. Abhi, yesterday only I was speaking to one of my friends, and Hmm. I was just telling him all sorts of crazy things I have done in school and college life. And he told me that you always look like that studious person to me, like topper type and all. And I was like, no, I wasn't. I was just the opposite. So both phases, school phase also and college phase, even at workplace also, to be very honest, I'm a very, very chill out person. Like Okay. Okay. the previous edutech when I was where I was working, Hmm. honestly telling you, most of the people used to even question कि ये कुछ काम करती भी है. Like the whole day she is just jumping here and there, cracking jokes, official team group पे sending stickers and all, and still how is she managing to meet the targets? So that used to be the common question. So in school I used to be uh, I was always the backbencher, बट Okay. कॉलेज में एक्चुअली बैक बेंचर्स टॉपर्स होते थे. सो कॉलेज में आई वाज द फ्रंट Oh. बेंचर. Okay. सो Okay. आई Okay. यूज्ड टू स्लीप ऑन द फर्स्ट डेस्क. Okay. Okay. So that's a different kind of a person you are, because mostly achieving so much at such a young age, it's a really good thing. And being a front bencher, as you said in your college, it was a totally different thing. And being a back bencher from your school. So how do you still manage all these things, being casual and yet being getting your job done on time? So Okay, balancing these two things before are very important. before going to that, Shankar, firstly, Yes. thank you that you thought that I am successful, because कुछ दिन पहले ही my parents were watching KBC, and there was Hmm. this doctor who came and she said कि मेरे parents ने 5 साल मेरी फीस में बहुत invest किया है, and now Hmm. I'm doing this. I feel grateful that I'm successful for them and all. And my Hmm. parents were becoming very emotional because they still don't consider me to be successful. So they were like 5 साल तो हमने भी पढ़ाया था, but we wish we could have said the same thing about our daughter. So that's a big thing you've told me. Other than that, in my introduction, I forgot to mention to our audience that currently I'm a legal career coach and an Hmm. entrepreneur by Yes. profession. I am the founder of Your Legal Career Coach, a Yes. platform we are creating for law students, where we can dedicatedly share content related to career Hmm. opportunities for law students and lawyers. Now, Hmm. coming back to your question, Hmm. how do I balance that? Hmm. One thing I've understood is कि लाइफ में पहले तो हर जगह बैलेंस बहुत ज़रूरी चाहिए होता है. थोड़ा सा भी आप अगर डीरेल हो जाते हो तो बहुत Exactly. मुश्किल होता है. Hmm. And when I was into corporates, I had I was getting praised for the work, but honestly personally I was not liking what I was doing. Only reason being, मेरा रूल बहुत सिंपल है कि जब तक हम प्रोफेशनली काम कर रहे हैं, लेट्स बी 100% प्रोफेशनल, लेट्स बी 100% रिस्पॉन्सिबल एंड डेडिकेटेड. बट यू डू Okay. नॉट हैव टू हैव द सेम इमेज थ्रू आउट, बिकॉज अल्टीमेटली आप रोबोट्स नहीं हो, यू आर ह्यूमंस. सो आपका एक होलिस्टिक पर्सनालिटी होना चाहिए.
तो वो जबरदस्ती खुद को एक पर्टिकुलर टाइप में फिट करना एक्चुअल में आपके लिए काफी एक पॉइंट के बाद टॉक्सिक हो जाता है. Like I am Hmm. an ambivert person. At times I am into that introverted phase where I'm purely dedicated towards one shell wala corner, and at the same time I also have that extrovertedness in my personality where I like talking to people, I like learning new things, networking and all. So if we focus too much on only one, uh, like what do I say, मास्क ऑफ योर्स, दैट मैं Hmm. ऐसा ही हूँ, अगर आप खुद को ही उसमें डिफाइन कर देते हो, then it becomes very difficult for you yourself to maintain your authenticity. Yes. तो इसीलिए I have this rule that when I'm working, I am 100% serious and professional in terms of responsibilities. And Okay. otherwise, we can just be like calm, composed. We can give space to each other. Hmm. बिकॉज अगर आप बहुत ज़्यादा सिंसियर सीरियस, अगर मैं बोलूँ दैट आई एम द फाउंडर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड माई टीममेट्स नो दैट दे कैन कम एंड क्रैक एनी शिटी जोक विदाउट हैविंग टू थिंक ट्वाइस, बिकॉज दे नो कि जब हम जोक क्रैक कर रहे हैं तो हम वहां पे उस समय प्रोफेशनल काम नहीं कर रहे, एंड इसीलिए उनको ये जबरदस्ती का लाइन या ग्लास सीलिंग ड्रॉ करने का जरूरत नहीं. बट एट द सेम टाइम Hmm. व्हेन वी आर वर्किंग, सो देन दे कैन एक्सपेक्ट कि अगर गलती हुआ तो टाइमली फिर उसका रिवॉर्ड भी दे विल बी गेटिंग. सो दिस बैलेंस इज समथिंग आई स्टार्टेड अप्लाइंग व्हेन I saw that this was something which was not initially offered at corporates. Okay. So I experimented it last year when I was heading the placements team, Okay. and then I continue the same culture here also. Okay. Okay. That's some definition of a very good boss with a very slight touch of being dangerous also, I guess. नहीं नहीं, आई एम That. वेरी सेफ. पीपल कैन वेरी वेल, व्हाट डू आई से, कैलकुलेट, क्योंकि अगर आपने गलती किया तो आपको पता ही है फिर, तो इसीलिए कैलकुलेशन बिकम्स इजियर. अनप्रिडिक्टेबल नहीं हो जाते कि सडनली कुछ भी बम फट Ah. जाएगा, ऐसा नहीं होता. Okay, so moving on. So I would like to ask you a very normal question that is thrown to most of the achievers in this whole world. That is, how do you deal with failure? I mean, I'm not sure. I would like to ask you, like, how much failure have you faced in your life? Okay. With that, I believe you're calling me an achiever also. So, Yes, yes, thank you absolutely I so am. much. Absolutely I Uh, am. Now, failures actually are part and parcel of our lives. And honestly, since you have given me such a big platform, I'll be very transparent here and honest in Okay. sharing that I have failed so many times. Like I was just sharing with my friend Hmm. yesterday that like मैंने मतलब ऐसे ऐसे हरकतें करी हैं, ऐसे ऐसे सब्जेक्ट्स में आई फेल कि आई कांट इवन टेल यू, चाहे वो स्कूल हो चाहे वो कॉलेज हो. एंड वही एक तरह से काफी अच्छी मेमोरीज भी है, क्योंकि हम खुद ही हंसते हैं कि अरे यार मैं इस सब्जेक्ट में फेल हुए, राइट. बट हाउ डू यू टेक इट इज अप टू यू. Hmm. एग्जाम्स के, स्कूल्स के, कॉलेजेस के सब्जेक्ट्स के फेलियर्स हैड नेवर अफेक्टेड मी पर्सनली, other than the fact that मेरे टैक्स लॉ में बहुत कम नंबर आए थे, and I used to think कि because I had actually put in a lot of effort in that, I did not Uh, fail it, hmm. but yeah I really wanted to score well, क्योंकि नंबर्स का गेम था, मैंने आपको बताया Hmm. था. Hmm. तो वो नहीं हो पाया, एंड फ्यू अदर सब्जेक्ट्स इन आर कॉलेज जिनमें Hmm. एक्चुअली आई रियली वांटेड टू स्कोर वेल, बट दोज वर नॉट फेलियर पर से. हाँ, मेरा बिगेस्ट फेलियर्स जो अगर मैं आपको कुछ गिना सकूं, इनसे Hmm. बहुत ज़्यादा भी हैं. Hmm. मेरा पहला फेलियर जो सबसे बड़ा था वो आई थिंक क्लास 11th या 10th में, एक बार मेरे मैथ्स में बहुत कम नंबर आए थे, एंड उससे पहले आई यूज्ड Uh, टू बी वन ऑफ द हाईएस्ट स्कोरर्स इन मैथ्स. आई वाज okay. ऑलवेज एन एवरेज स्टूडेंट, बट Okay. मैथ्स में नंबर अच्छे आते थे, इसलिए पेरेंट्स कभी पढ़ाई के लिए ज़्यादा बोलते नहीं थे. और Okay. अगर कोई भी मुझे कभी बोलता था पढ़ाई कर लो, तो पता था कि ये मैथ्स की बुक लेके बैठ जाएगी. सो Okay. दैट इज अ मेमोरी ऑफ माइंड, कि वो मुझे Hmm. बहुत गंदा हिट किया था कि ये हो क्या गया अचानक से, मतलब पैरों के नीचे से जमीन कैसे हिल गई. तो Uh, पहला वो था. दूसरा मेरा, जब मैंने कॉलेज में कैंपस प्लेसमेंट डे जीरो छोड़ा था, सोच hmm. के कि आई विल सिट फॉर आर्म फोर्सेस, एंड Okay. आई लाइक फ्रॉम अगस्त टिल दिसंबर आई वाज प्लानिंग द स्क्रिप्ट इन माय हेड एवरी Hmm. नाइट, Hmm. रिहर्सल करके कि व्हाट Hmm. एग्जैक्टली एम आई गोइंग टू टेल माय फैमिली. दैट Hmm. 5 साल से आई हैड बीन टेलिंग देम दैट आई विल बी बिकमिंग अ कॉर्पोरेट लॉयर और लीगल एडवाइजर, एंड Hmm. सडनली व्हाई डू आई वांट टू जॉइन फोर्सेस.
Hmm. because I had family members from forces and कहीं ना Hmm. कहीं they thought that maybe I'm looking for an easier way out. शायद मुझे Hmm. कॉर्पोरेट से डर लग रहा है और इसलिए मुझे लग रहा है कि शायद फौज मेरे लिए आसान होगी, which was not true. So therefore, Hmm. from August till December, I was preparing the script in my head, and I filled the form in January. December Hmm. and January में मैंने AFCAT का फॉर्म भरा Hmm. and I was very hopeful क्योंकि AFCAT is slightly easier than CLAT. तो मैंने उसको बहुत Okay. lightly ले लिया था कि अगर CLAT क्रैक हो गया तो शायद AFCAT भी हो जाएगा. And I Hmm. failed because I couldn't clear the cutoff. ठीक है, Uh, I'm using this okay. word failed here because so that people are able to connect to it. And Hmm. that was like another biggest blow because Hmm. लाइक आपके दिमाग में एक स्क्रिप्ट चल रही होती है कि ये होगा फिर ऐसा होगा वो ऐसा होगा. तो एकदम से मतलब उस एग्जाम ने मेरे साथ रिवर्स साइकोलॉजी खेल दी. तो अभी पता ही नहीं था कि नेक्स्ट प्लान ऑफ एक्शन क्या. एंड आई हैड ऑलरेडी रीच द एंड ऑफ माय फिफ्थ ईयर. Hmm. सो दैट वाज अनदर फेलियर. उसके बाद मेरा जब मैंने लॉ फर्म का जॉब छोड़ा बॉम्बे से तो Hmm. बहुत ही फिल्मी स्टाइल में मेरा मतलब मैंने एग्जिट लिया था दैट Okay. जैसे मूवीज में दिखाते हैं ना कि बिल्कुल कायनात आपको इतनी शिद्दत से चाहते हो कि कायनात मिलाने को तैयार. तो वैसे ही बिल्कुल बॉलीवुड स्टाइल में मैं ऑफिस से जैसे मैंने पार्टनर्स को बताया, बोथ माय पार्टनर एंड सीनियर पार्टनर एंड they both took it very positively and they started supporting saying कि जमाना का go ahead all the very best and we are with you and doors this side are always open for you but we know you'll never have to turn back and वगैरह वगैरह we knew you would join forces and all. तो मैंने कहा यार ऐसा कैसे. आई वॉज तो थिंकिंग कि ये बोलेंगे व्हाट इज दिस लाइक हाउ कैन यू लीव बिफोर कंप्लीटिंग 1 year एंड ऑल दैट. ठीक है, मैंने कहा बढ़िया है. Universe is conspiring. Suddenly, I got my dates also Hmm. of SHB and everything. And I told my family that I'm leaving my corporate job, coming back to home, and my parents were also very positive about it. तो मैं बिल्कुल उसी मूड में आ गई कि अरे बिल्कुल कायनात तो अब पलट ही देगी सब कुछ मतलब बिल्कुल अपने फेवर में कराने के लिए. मतलब बॉलीवुड स्टाइल में सामान उठाया एंड आई केम होम and then I Okay. went for my SSB. Now, biggest failure personally for me was getting screened out in my first attempt. Screen out is basically selection के आपके multiple stages होते हैं. जो first stage Hmm. होता है day 1 का, या Hmm. तो आपको उस दिन बाहर निकाल देते या फिफ्थ Hmm. डे के बाद कॉन्फ्रेंस आउट करते. तो आई गॉट Okay. स्क्रीन्ड आउट एंड दैट वाज काइंड ऑफ अ ब्लो ऑन माय फेस कि अरे ये क्या हो गया. वाज़न्ट यूनिवर्स कॉन्स्पायरिंग. शाहरुख खान ओम शांति ओम में झूठ बोल रहा था. ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं है. तो ये सारी चीजें फिर Yes. उसके बाद भी काफी चीजें हुई जैसे लास्ट ईयर आई डिड गेट रिकमेंडेड Hmm. फ्रॉम आर्म फोर्सेस. आई गॉट ऑल इंडिया Hmm. रैंक 12. Okay, अगेन उसमें that's होने के really बाद good. फिर आपका मेरिट आउट हो जाना बिकॉज गर्ल्स के लिए 2 ही सीट. तो वो भी Oh. एक तरीके से आपका सब कुछ पॉजिटिव होने के बाद भी अगर फाइनल रिजल्ट एंड रिजल्ट नेगेटिव है तो वो भी Hmm. एक तरीके से फेलियर काफी लोग कंसिडर करते हैं क्योंकि आपकी ऑब्वियसली डेफिनेशन ऑफ फेलियर वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. बट यहाँ पे व्हाई आई एम रेफरिंग दिस एज अ फेलियर इज आई डू नॉट टेक इट एज अ फेलियर पर्सनली. बट हाँ, Okay. फेलियर इज बेसिकली थिंग्स डिड नॉट हैपन द वे यू एक्सपेक्टेड देम टू बी, राइट. Hmm. तो That's दैट वाज देयर. चलो कोई बात नहीं, फिर रेकमेंड हो गए तो उसके बाद लगा कि कोई बात नहीं इस बार मतलब फिजिकली आई वाज वीक, आई वाज हॉस्पिटलाइज्ड बिफोर गोइंग फॉर माय एसएसबी. तो आई वाज लाइक कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम फिजिकल फिटनेस में अच्छा करके आएंगे एंड वी विल बी एबल टू सेल थ्रू. hmm. एंड आई वेंट देयर एंड सडनली मेरे ग्रुप में झगड़ा हो गया तो मैं चुप हो गई. मैंने आई डिडंट पार्टिसिपेट ड्यूरिंग माय नेक्स्ट अटेम्प्ट. And Okay. they screened me out obviously for obvious reasons because I didn't participate only क्योंकि Hmm. रोडीज बन गया था बिल्कुल वहां पे सीन, राइट. Okay. तो चीजें बहुत पास से मिलते मिलते छूटना, बहुत चीजें. नाउ दिस वाज अबाउट माय स्टोरीज ऑफ फेलियर. अब आपका जो मेन सवाल था हाउ डू आई Hmm. फेस देम. Hmm. तो Hmm. किसी भी इंसान के लिए फाइट या फ्लाइट दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो आप उसको Hmm. फेस करो और Hmm. या फिर आप उसको उससे भागो. आई हैव Hmm. डन बोथ. Honestly, I have done both in different phases of my life, in different frames of my mind, and depending on the maturity level also. Hmm. Hmm. Sometimes I escaped it also कि ठीक है यार नहीं आए क्या नंबर, चलो कोई बात नहीं, एक काम करते हैं जाके आइसक्रीम खाते हैं और फिर थोड़ी देर सोते हैं मस्त, फिर मूवी देखेंगे और भूल जाएंगे, कोई बात नहीं, Hmm. क्या कर सकते हैं. द एसएसबी पार्ट हैड एक्चुअली हिट मी रियली हार्ड बिकॉज एक तो गवर्नमेंट एग्जाम्स के साथ ये प्रॉब्लम भी है कि ये थोड़े से एडिक्टिव होते हैं. मतलब वो शेर के मुंह में खून लगने वाली बात जैसा हो जाता है कि आपको आपको चैलेंज कर देते हैं.
तो आप थोड़े से अपने ईगो में भी आ जाते हो कि अरे कैसे नहीं हुआ, आई विल गिव अनदर अटेम्प्ट एंड ऑल। Okay. तो वही चीज था, एसएसबी वाज द बिगेस्ट थिंग व्हिच हैड हिट मी। एंड देन आई हैड टू चॉइसेस, या तो मैं उस ऑर्गेनाइजेशन या उस एग्जाम पैटर्न के बारे में गलत चीजें बोलूं कि Hmm. दे लॉस्ट अ टैलेंट इन मी एंड ऑल दैट, या फिर Hmm. दूसरा चीज वेरी सिंपल कि आई गो इनवर्ड एंड फाइंड आउट वेयर डिड आई गो रॉन्ग। सो इसमें मेरे जो लॉ फर्म में एक लिटिगेशन के पार्टनर थे। Hmm. I was in the banking team, and Hmm. this senior was kind of mentor to most of us. So Hmm. whenever we had any problem, we used to reach out to him for his guidance. So then Hmm. I told him कि मतलब I have an inclination, but मेरा हुआ नहीं clear. So what do I do? So he said a very simple thing. He said समानक अगर तूने these are exactly his words. Okay, he said Hmm. Hmm. समानक अगर तूने 100% दिया था अपना and अगर नहीं हुआ तो Hmm. don't think about it, leave it there. Destiny has different plans for you. Or Ah. if you think I could not give 100%, then Hmm. then do not talk anything about क्या हुआ क्या नहीं हुआ, किसकी गलती किसका क्या। Just think how can you give 100% next time and go and give 100%. That's it. So that was a lesson I took from him, and that is the only thing I started applying. तो इसीलिए जब स्टार्टिंग में I couldn't clear my SHBs, तो Hmm. उसके बाद मैंने यही मैसेज खुद को बोला कि डिड आई एक्चुअली गिव माई 100%, वॉज आई बीइंग ऑनेस्ट विद माई सेल्फ। इफ Hmm. आई वॉज, then maybe destiny has different plans for me, and if I was not, Hmm. then maybe I should work on the areas of improvement I have. Okay. Okay. That was a really hell of a roller coaster ride for you since your college days and since your school days, I guess. That was really, really inspiring. Leaving a set corporate job, going for something else which is very, very, very uncertain, and then cracking that thing, failing in that thing, then going back to that thing again. That's really inspiring. I mean, for us, for the people who are just passing their law degrees, for me, for example, me, I haven't still received my enrollment number yet. So your stories are inspiring me to get the courage tomorrow morning and go to court again. Because right now, our situation in court is not that of a, we don't have a good place over there because we are just mere interns right now. And Okay. coming from a government institution, we don't get good placements. So it's a totally different thing. But these kind of achievements that you shared, you don't have to be a very big person, but these kind of small achievements that you shared right now, these are inspirations for us. These will be the inspirations for all of our listeners. That's what I was talking all about. Okay. Yeah. So, Thank you so much, like Mashti. one thing which we have to do is Yes. just look at the mirror every morning, and if you Hmm. did something wrong, you'll not be able to face yourself. But if you know I did not do something wrong, maybe Hmm. situations were not in the control, then Hmm. always have trust in yourself. Like the Hmm. दुनिया हमेशा क्वेश्चन करेगी, मतलब when I failed in my 11th के subjects Hmm. and Hmm. my teacher said that इसका कुछ नहीं हो सकता, so Hmm. there were so many relatives of mine who thought she might not be able to do anything. कोई बात नहीं, मैंने रिपीट लिखा है, like I was given the chance to join my 12th standard. उसके Hmm. बाद I cleared CLAT, I got a corporate job in Bombay, and those are the Hmm. same relatives who ask me now to guide their relatives or their kids या जो भी। Hmm. वो लोग मुझे डाउट करते थे, आज वही लोग आके लीगल एडवाइस भी मांगते हैं, अपने से रिलेटेड चीजों में भी एडवाइस मांगते हैं, राइट। सो यू नेवर नो व्हेन थिंग्स Hmm. विल, लाइक जो हिंदी में मैं अगर बोलूँ तो पासे कब बदल जाएंगे वाला चीज, Exactly. राइट। जस्ट हैव फेथ इन योरसेल्फ एंड बी वेरी वेरी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ। गलती करिए कोई बात नहीं, दुनिया के सामने आप झूठ भी बोलो, नकाब भी पहनो, बट बी वेरी ट्रूथफुल टू योरसेल्फ दैट हाँ मुझसे ये गलती हुई है। हैव द ऑडेसिटी एंड गट्स टू एक्सेप्ट that yes, this is exactly where I went wrong and I need to work here. Okay. That's Because this is really one rule something. which I apply at business level also, that I do not believe in the concept of business, to be very Hmm. honest. हम Hmm. सब ने इन लॉ में, I'm so sorry, I'm like extending my answers. No, So no, as no, lawyers absolutely हमें not. We are here for this आदत to. होती है No, no, हमें absolutely not. आदत होती है बहुत लंबी लंबी बातें करने की। No, So no, to any absolutely not. viewer You are here more than welcome. who is Please, please. yeah, so I was saying कि business में भी I do not believe in the concept of competition, and especially because हमने लॉ में कॉन्सेप्ट पढ़ा है एंटी ट्रस्ट का,
एंड हम्म, एंटी ट्रस्ट या कंपटीशन लॉ में सबसे पहली चीज यही बोलते हैं कि मार्केट में उबर के लिए ओला का होना और पेप्सी के लिए कोका कोला का होना बहुत जरूरी है। हम्म, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई फील अबाउट एनी बिजनेस ऑल्सो, दैट आपका कंपटीशन आप खुद ही हो। आपका कंपटीशन कोई सामने वाला नहीं है। आप कौन हो एज अ होलिस्टिक पर्सन, हम्म, not as आप as a lawyer, आप as maybe a citizen of West Bengal, आप as a लड़का लड़की नहीं। आपका होलिस्टिकली ओवरऑल आप कौन हो, इन ये सारे एक एक चम्मच आप में वो है, घुले हुए हैं। हम्म, बट ये आपको इंडिविजुअली डिफाइन नहीं करते ना। तो हम्म, आप एज अ ओवरऑल पैकेज जहाँ पे भी जाते हो, वो आप अपनी इंडिविजुअलिटी एज अ होलिस्टिक पैकेज ले जाते हो वहां पे। तो मे हम्म, बी इवन इफ टू पीपल आर डूइंग द सेम थिंग in the same manner, still they would bring out different results because they will have their own ideas and all. So easily लोग बहुत ज्यादा इन चीजों में पड़ जाते हैं कि अरे कॉर्पोरेट जॉब है, द फर्म विल हैव ओनली 10 सीट्स एंड ऑल। सो आई आस्क माय स्टूडेंट्स कि आप इतना जेलस क्यों हो रहे हो, किसी और के मिलने ना मिलने से पॉजिटिव क्यों हो रहे हो? आपको तो एक ही सीट चाहिए ना। हम्म। मार्केट में भी सेम प्रिंसिपल अप्लाइज, दैट आपका यू कैन नॉट ओनली वन बिजनेस कैन नॉट केटर टू एवरीबडी। हम्म, गूगल के लिए भी अभी याहू बचा है, राइट? हम्म, सो हम्म। जस्ट फोकस ऑन what you can offer, how you can improve yourself. That's it. That's the only philosophy I believe in. Okay, okay, okay. Thank you so much. Thank you so much. So, let the casual side of this conversation be over there. Now let's get into a very serious thing. Not very, but a bit serious thing. So, the line you've chosen for yourself, it's a bit different. As I said earlier, that I'll come back to this armed forces thing. So, it will be a very good opportunity for all our listeners to know how you opted for this, like how you prepared yourself, from where did you find the interviews for application place and everything. If you can just tell us about this whole thing. Okay, so basically, when we talk about armed forces, Hmm, I'll focus on Army, Navy, Air Force. hmm, I'll not be talking about Coast Guard or BSF and SSB, Sashastra okay, Seema Bal or ITBP. I'll okay, majorly be focusing about the three forces, hmm, Army, Navy, Air Force. So one major mistake you did here was calling it a job. You okay. should never Sorry, do it. I'm really It is really service apologize. exaction. No problem, no problem. So like for lawyers there are two options. One is they can join as join for the legal entries, and the other is non-legal roles. They Okay, I'll go one by one. So Indian Air Force has a common exam. It's called AFCAT, AFCAT, Air Force Hmm, Common Admission Test. okay. And within AFCAT only, they have now, I think, 2 to 3 seats dedicated for legal graduates. Okay, law Okay. graduates, sorry. So AFCAT का syllabus is similar to CLAT का syllabus, very basic, English, maths, logical reasoning, GK, and these kind of subjects only. For AFCAT, you need to have overall 60% marks in your graduation. Uh, just like you might have heard about, I'm not very sure, but if you have heard about CDS, AFCAT is similar to that, Hmm, slightly easier than CDS. Okay, hmm, but again, there are fixed number of seats, so you can either specifically there are 2 seats now reserved for law graduates. पहले hmm, तक ऐसा नहीं होता था. So hmm, you could have opted for ADAM, logistics, and um, so what is the third option? It's called ground duty basically, okay, non-pilot roles. Okay, okay, non-flying roles. अगर okay. मुझे कॉमन मैन की लैंग्वेज में आई हैव टू एक्सप्लेन, तो बेसिकली देर आर पायलट्स एंड देर आर नॉन पायलट्स. सो Hmm, पायलट्स के लिए पायलट बनने के लिए यू नीड टू हैव साइंस बैकग्राउंड इन योर 12th स्टैंडर्ड. hmm, I think I'm not very sure. This we'll have to check whoever is applying because I never applied for pilot role, so I didn't hmm, check the specifications कि graduation में भी था या नहीं. But hmm, yes, 12th तक तो उसमें maths होना mandatory है. hmm, Now for non-combat या non-pilot roles, which is in फौज की language में it is called the ground duty roles, GD roles. hmm, hmm, So GD में आपका आता है administration. In short, we call it ADAM. Then hmm, you have logistics, hmm, and then there is med department, the hmm. meteorological, जो weather के updates देते हैं.
ठीक है। Hmm. तो Hmm. एज लॉ ग्रेजुएट्स यू कैन ईदर ज्वाइन एडम ब्रांच और द लॉजिस्टिक्स ब्रांच। नाउ आर्म फोर्सेस में लॉयर्स के लिए द डेजिग्नेशन इज कॉल्ड जैग, JAG, which stands for Judge Advocate General. Hmm. Air Force does not have a direct entry for JAG. Air Force में you have to join as a ground duty officer only, and Hmm. after serving for couple of years, then they have these circulars which come where they say that we have a vacancy, and it is circulated internally amongst officers. So they say if anybody is from legal background, then you can like take up these responsibilities. Legal related उनका जो भी Oh. Hmm. रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो Oh. होगा, ठीक है। तो Hmm. एयरफोर्स की जो लीगल रिक्वायरमेंट से रिलेटेड वैकेंसी होती है दैट Hmm. इज सर्कुलेटेड इंटरनली ओनली, एंड उसके लिए कोई डायरेक्ट अलग से हायरिंग इज नॉट डन। ओके, Hmm. Hmm. इज इट ओके इफ आई एम स्पीकिंग इन हिंदी और द ऑडियंस फॉर Absolutely, दिस इज ओके? absolutely, it's okay. Absolutely, it's Okay, because a lot of people who want to join forces Hmm. are not very comfortable at times with core English, so that's why Hmm. to explain those concepts I was Hmm. speaking in Hindi. Okay. Then comes Army and Navy. Both Army and Navy, because they are bigger in size, they have more number of legal related work. So Hmm. they do have direct legal hiring. It is called the JAG entry for law graduates. Hmm. And आर्मी में दो तरीके, आर्म फोर्सेस में दो तरीके से आपका सिलेक्शन होता है। वन इज कॉल्ड डायरेक्ट एंट्री, विच मीन्स यू Hmm. डू नॉट हैव टू राइट एनी एंट्रेंस एग्जाम, you are directly called for a 5 days selection procedure. And the other way is where you write an exam. Like for example, AFCAT and CDS में first you write the exam, only Hmm. if you clear the written cutoff you will be called for the SSB. So JAG जो है legal branch के लिए, it is a direct entry. You will be when you apply for army, the percentage cutoff is 55%. For Hmm. Navy also they claim it 55%. Like when I say claim it, मतलब notification में 55% ही लिखा होता है, Hmm. लेकिन आर्मी में जितने लोग अप्लाई करते हैं वो ऑलमोस्ट सबको ही SSB के लिए बुलाते हैं। बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि वो किसी को ना बुलाएं, बट नेवी इज वेरी सेलेक्टिव। नेवी कितने लोग अप्लाई करते हैं उसके बेसिस पे कितने लोगों को वो अकोमोडेट कर सकते हैं फॉर SSB, उस बेसिस पे वो कोई एक कट ऑफ सेट कर देते हैं। Hmm. I am not very sure again here because I did not apply for Navy, but I was Hmm. told that amongst the people who went for their Navy SSB this time, they said somewhere around above 65 to 70%, जिनका ग्रेजुएशन का स्कोर था, those Hmm. people were called for the Navy SSB. So Hmm. officially it is 55% only, but Navy makes it very clear in the notification itself that they will not be calling everybody, and based on the number of applications, जो भी उनका Hmm. criteria होगा, they will be calling fixed number of people. Hmm. So however, army is regular, like every 6 months JAG की वैकेंसी आती ही आती है, चाहे सीट्स कम हो जाए, बट वैकेंसी आती है। नेवी इज नॉट। नेवी ने लास्ट अपना 2018 दिसंबर में कराया था JAG, देन उसके बाद 2 साल तक कुछ नहीं हुआ। फिर लास्ट ईयर दिसंबर जनवरी, मतलब लास्ट ईयर दिसंबर, इस साल जनवरी के बीच कभी नोटिफिकेशन आई थी, Hmm. and they gave their SSBs in I think June, जब पैंडेमिक चल रहा था, Hmm. Hmm. एंड उनका रिजल्ट अभी लास्ट वीक आया। तो मतलब Oh. ऑलमोस्ट पूरा साल Hmm. चला गया। Hmm. तो आई थिंक Hmm. एक ही and इस साल का भी एक ही बैच नेवी का JAG का ज्वाइन करेगा। Okay. So this is how like the entire process is. In Hmm. addition to this, if somebody is aspiring and they do not want to commit the mistake like I did, which was Hmm. only focusing on either AFCAT or JAG, then anybody who's genuinely interested in joining forces should Hmm. also sit for CDS exam, because CDS and then there comes territorial army, but वो तो खैर आप बाद में I think around 37-40 तक की एज तक भी दे सकते हो, बट Okay. CDS जो होता है कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, क्योंकि CDS से भी आप सेम अकेडमी OTA चेन्नई ही जाते हो, and then in the near future of your joining the forces, then whenever there's a vacancy you can always request and apply कि मुझे अब लीगल ब्रांच में मतलब I want to move to the legal branch, वो Okay. ऑप्शन रहता है। एंड दूसरा चीज, क्योंकि SSB में वो आपसे पूछेंगे कि आपको फौज क्यों ज्वाइन करना है, Hmm. तो फौज में ऐसा तो है नहीं कि या तो कोर कॉर्पोरेट या कोर लिटिगेशन का काम आपको मिलेगा, Hmm. राइट? Hmm. इट इज टू अ ग्रेट एक्सटेंट लीगल एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, Hmm. राइट?
Hmm. So it has nothing to do with actual core legal degree per se. Hmm. जो बाहर लोगों को थ्रिल आता है कि लॉ की डिग्री है तो हम कोर्ट में आर्ग्यू करेंगे या ट्रांजैक्शंस में पार्टिसिपेट करेंगे, ये Hmm. सब चीजें तो वहां होती नहीं है. तो Hmm. देन दे आस्क यू व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन, बिकॉज अगर आपको कोर लॉयर लॉयर वाली फील लेनी है तो आप तो बाहर करो वो चीज. Hmm. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स कि सर मैं यूनिफॉर्म के लिए आया हूँ, मुझे तो यूनिफॉर्म, मुझे देश को सर्व करना है. तो देन Hmm. दे सी, अगर आपको सर्व करना है तो वाई ओनली वन एंट्री, फिर तो आप किसी भी एंट्री से आओ ना, यूनिफॉर्म तो सब में सेम मिल रही है. Hmm. Right? So it Hmm. shows your intention. How genuinely serious are you about joining forces? Or are Hmm. you very like particular कि मुझे केवल पायलट ही बनना है, पायलट नहीं बनूंगा तो मैं किसी और रोल के लिए नहीं आऊँ. देन दे विल बी लाइक कि ठीक है आप इंडिगो और एयर इंडिया ज्वाइन कर लो, फौज में क्यों आ रहे हो. राइट? Hmm. बिकॉज फौज में इट इज ऑल अबाउट कॉमरेडशिप, टीम वर्क. Okay. तो ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे ये रोल नहीं मिला, कोई इशू नहीं है, मैं दूसरे रोल में साथ में मिलके आई विल बी एबल टू कंट्रीब्यूट. हीरो बनने के लिए फौज ज्वाइन नहीं होती है ना. Hmm. Exactly. Exactly. हम्म. Your intention matters. Why you want to यस. join. Exactly. यस. Okay. Okay. That was a really good, a really informative answer on your part. Thank you so much for that answer. Okay. So I would just in the previous previous meet, you were saying that there are only two seats reserved for girls, for women. Sorry, for women. So do you think that those seats should be increased? Like, ओके. सो इट डिपेंड्स फ्रॉम एंट्री टू एंट्री एंड okay, द नोटिफिकेशन टू नोटिफिकेशन. ऐसा फिक्स नहीं है दैट हर टाइम okay, okay. सेम There's ही no होगा. fixed thing. Okay, okay, okay. हाँ. सो एफकैट में दे हैव टू सीट्स रिजर्व फॉर लॉ ग्रेजुएट्स. इट इज नॉट कि आपको लड़का होना है या लड़की होना है. इट इज Okay. नॉट जेंडर स्पेसिफिक. Hmm. पहले तक क्या होता था दैट दो सीट्स वर क्लब्ड विद द एडम सीट्स. Hmm. Now Hmm. from those Adam seats only they have mentioned two seats specifically reserved for law graduates. इसका मतलब ये नहीं है Hmm. कि दो से ज्यादा law graduates एयरफोर्स नहीं ज्वाइन कर सकते. Hmm. Hmm. राइट? सो Okay. दैट इज देयर. एंड विद रिस्पेक्ट टू आर्मी, आर्मी Hmm. क्योंकि बहुत फ्रीक्वेंटली हर 6 मंथ्स में दे हैव द नोटिफिकेशन कमिंग आउट. सो Hmm. आर्मी का ऑन एन एवरेज 2 to 3 सीट्स होती हैं. इन द Hmm. पास्ट दे हैव ऑल्सो टेकन 7 to 8 गर्ल्स Hmm. when they had a vacancy. But Hmm. अभी क्योंकि JAG में you start as a SSC, which means short service commission, which is Hmm. 10 plus 2 plus 2 years का service. And Okay. then because of Supreme Court's orders in the recent past and all, so Hmm. now JAG में you can get permanent commission also based on your performance, based on your Hmm. merit. Hmm. So lot of Okay. senior lady officers have now taken PC roles, Hmm. and this is the reason that they do not have too many vacancies for freshers. Similarly, Okay. for boys also, the seats are around 7 to 8 only. Hmm. जब गर्ल्स के लिए 8 थी, आई थिंक उस टाइम पे दे हैड अराउंड 10 to 11 सीट्स, दो आई एम नॉट वेरी Okay. श्योर Hmm. बिकॉज दिस इज आई थिंक अराउंड 3 years बैक, 3 to 4 years बैक. Okay. अभी लास्ट बैच में दे हैड 7 seats for boys, Hmm. men, and this Hmm. time they have only 5 seats for men. So the seats keep fluctuating. Okay. However, army has a gender specific criteria at selection stage only. Navy does not have. तो नेवी ने इस बार 2 seats निकाली थी, and Hmm. Navy said you fight on merit. So it could be both boys, both girls, one boy, one girl. And Hmm. luckily, both the seats went to girls only. So we were very happy because Okay. those two girls were there in Army JAG ka merit also previously, Hmm. Hmm. but because of the limited number of seats, they were not able to join. Okay. Okay. Got it. Got it. Got it. Okay. Yeah. So I wouldn't stretch this conversation much far, but this was the most important thing that we wanted to know, that we want our listeners to know about this totally different view of this legal career. Because when we think about a legal career, for example, if you take me, I'm just a very, very, very fresh law graduate. Right now, in my mind, I have two things. Either I'll go for corporate law or I'll go into hardcore litigation. Like you had started, you had taken up a Hmm. corporate job. So Hmm. my intention is to go for hardcore litigation, or if that Mhm. doesn't work, go for a corporate job. But this total different scenario of law exists. This was really important for me so that I can
at least think about something else regarding my law career. So thank you so Shankar, much. if I'll be very honest with you, Yes, ma'am. uh, हो जाता है. You are right. We have Mm. in college days a very myopic view about careers, and as law graduates, we only think about litigation and corporate. But honestly telling you, these two in themselves are huge umbrellas. आपने Mm. इंट्रोडक्शन में ये बोला था that I come from a government college and I do not have a lot of scope of placements. Mm, Honestly, mm, ये mm. बहुत गलत स्टेटमेंट है because ever since I entered into the field of legal career coaching, and the only Mm, reason I decided to go independent and pursue this was because mm, I did realize that people do not have proper mentors who can tell them the number of options they have. You know, mm, I created a holistic development program for law students mm, where for 6 weeks I tell them different things like क्या करना है कैसे करना है, but the program starts with the basic where for 1.5 hour I tell them what all different options do they have as mm, lawyers, and it involves both conventional options as well as non-conventional. आप corporate बोलते हो ना, corporate in itself is a huge umbrella. वहां पे transactions आते हैं, वहां पे drafting आती है, वहां पे mm, आपका mergers and acquisition का काम आता है, वहां पे mm, आपका VC, आपका वेंचर कैपिटलिज्म, इक्विटी mm, फंडिंग, ये सब चीज़ों का mm, काम आता है। बहुत सारी चीज़ें आती हैं। जैसे आपने बोला कि आई स्टार्टेड एज़ अ कॉर्पोरेट लॉयर। नाउ इवन आई यूज्ड टू थिंक that way, mm, but you mm, know, I was only in search of a good mentor. Like on the day of my job interview also, I was asked by mm. the senior partner, what exactly are you looking for, Samanika? And I said, sir, I'm a coachable person, I'm a first Mm. generation lawyer, I'm just looking for a good mentor. And I Okay. ended up being in banking and projects energy sector, which I had Mm, not even heard of. mm, नाउ फ्रॉम देयर आई गॉट टू नो कि यार प्रोजेक्ट्स भी कुछ होता है. इतना ज्यादा गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेशन में फोकस कर रही है, एंड देयर सो मच ऑफ मनी इन्वॉल्व इन इट. एयरपोर्ट्स mm, को प्राइवेटाइज कर रहे हो, एयर इंडिया को भी अभी बोल रहे हैं, अभी तो जा mm, चुका है, राइट? mm, सो mm, धीरे धीरे रेलवेज को बोल रहे हैं प्राइवेटाइज करने के mm, लिए, एंड इतना कंस्ट्रक्शन हो रहा है, डैम्स बन रहे हैं, ब्रिजेस बन रहे हैं, हाईवेज बन mm, रहे हैं, फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, mm, तो हर जगह. बट एज अ लॉयर वी आर सो प्रिविलेज्ड, honestly telling you, we are so privileged that we chose to study law, because mm, लॉ में जितने आपके लिए ऑप्शंस खुलते हैं ना, उतने कहीं नहीं खुलते. तो इट इज नॉट एक्चुअली कि हमारे पास ऑप्शंस नहीं होते, बट एक्चुअली प्रॉब्लम ये होती है कि इतने सारे ऑप्शंस होते हैं कि हम नहीं समझ पाते हमारे लिए सही और क्या है, गलत क्या. बिकॉज विद इन अनकन्वेंशनल रोल्स आजकल आपका इतने सारे खुल चुके हैं. बिजनेस डेवलपमेंट का रोल है, हर लॉयर को चाहिए कि कोई उसके लिए बिजनेस लाए, कोई पुराने क्लाइंट्स पकड़ के रखे. एंड mm, अगर वो उनका बीडी पर्सन जो है, बिजनेस डेवलपमेंट उनके लिए, जो लॉ फर्म के लिए, लॉयर्स के लिए, चेम्बर्स के लिए करता है, अगर mm, वो भी लीगल बैकग्राउंड से आता है, तो उस लॉयर को हेल्प मिलती है हमेशा. mm, बिकॉज अगर आपका बीडी प्रोफेशनल लीगल माइंडसेट से आपके क्लाइंट से बात करेगा, तो mm, दोनों पार्टीज एक दूसरे को ज्यादा बेटर समझ पाएंगी एज कम्पेयर टू mm. MBA पर्सन डूइंग द बीडी फॉर द Absolutely, लॉयर. absolutely. Yes. So unconventional mein there are so many things. Now there are so many edutech platforms coming up. And last year, working with the EduTech platform, only I realized that 80% of our staff was from legal background doing unconventional things. जो Mm, आपका मार्केटिंग कर रहे थे वो लीगल बैकग्राउंड से थे, जो सेल्स कर रहे थे वो लीगल बैकग्राउंड से थे, बिजनेस mm, डेवलपमेंट लीगल बैकग्राउंड से थे, प्लेसमेंट्स जो हैंडल कर रहे थे वो लीगल बैकग्राउंड से थे, बिकॉज mm, एवरीबडी वाज डीलिंग विद लॉ स्टूडेंट्स, राइट? सो mm. ऑप्शंस बहुत हैं गवर्नमेंट एग्जाम्स में भी. जैग इज जस्ट वन ऑफ देम. Okay. देन देर इज सेबी. लोग बोलते हैं जॉब्स नहीं है. नाउ सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया पेज द Okay. हाईएस्ट अमाउंट, राइट? Okay. 1,07,000 मंथली सैलरी से तो आप स्टार्ट करते हो एज अ सेबी ग्रेड ए ऑफिसर. एंड Okay. उसमें द लास्ट टाइम सेबी कंडक्टेड, नॉट 2021, इससे पहला जो उनका आई थिंक 2019 या 18 का जो भी पेपर था, 19 का था Mm, शायद, mm. उसमें दे हैड 12 सीट्स एंड Okay. ओनली 4 पीपल कुड क्लियर स्टेज 2. तो अगर वो चारों के चारों को भी प्लेसमेंट मिला होगा, फिर भी 8 सीट्स गॉट वेस्टेड. एंड वी से कि लॉ स्टूडेंट्स के लिए या लॉ ग्रेजुएट्स के लिए करियर अपॉर्चुनिटीज नहीं है. सेबी उस समय 90,000 सैलरी दे रहा था. 8 लोगों को 90,000 रुपए पर मंथ मिल सकती थी सैलरी, राइट? सो Okay. ऑप्शंस तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं लॉ ग्रेजुएट्स के लिए, लॉ स्टूडेंट्स के लिए. इट्स जस्ट Okay. दैट हमें मायोपिक व्यू पॉइंट नहीं रखना चाहिए, बहुत लिमिटेड नहीं सोचना चाहिए, Hmm. राइट? Okay. Okay. Got your point. It's really good to know all these things right now because
tomorrow morning I'll be again going to court, and then again I'll be Hmm. thinking that I have just two options. But right now, No, after I even have, when you go to the court ना, एक्चुअली पता है लिटिगेशन तो सबसे मतलब काफी लोग लिटिगेशन से भागते हैं फॉर टू रीजंस। एक तो सबसे बड़ा मिथ ये क्रिएट होता है कि लिटिगेशन में पहले 10 साल स्ट्रगल करना पड़ेगा, उसके बाद ही mm, कुछ हो पाएगा, तो mm, आपकी जो यंगस्टर वाला फेज होता है वो पूरा mm, वेस्ट हो जाएगा। एक तो ये सबसे बड़ा मिथ जो मेरे दिमाग में था, एंड mm, इसीलिए आई नेवर चोज लिटिगेशन व्हेन आई वाज इन लॉ स्कूल, एंड नाउ okay. आई रियलाइज कि कितना बड़ा गलती किया मैंने। दूसरा चीज, लिटिगेशन में लोगों को एक्चुअल में सच्चाई फेस करने से डर लगता है कि अगर जज ने क्वेश्चन पूछ दिए तो क्रॉस क्वेश्चनिंग हो गई तो जो उनके सेल्फ डाउट्स होते हैं वो उनके बहुत ज्यादा मतलब लिटिगेशन में जाना एक्चुअली रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ गट्स व्हेन यू आर कॉन्फिडेंट दैट मैं जो बोल रहा हूँ, मैंने जो रिसर्च करी है, इट हैज सम वैलिडिटी बिकॉज आई कैन ट्रस्ट माई वर्क, दैट आई वॉज Okay. वेरी ऑनेस्ट वाइल डूइंग दिस रिसर्च, राइट। सो Mm, लिटिगेशन भी ना ये सोच के मत करो कि लिटिगेशन अरे मतलब हंटिंग बिजनेस है, आज हिरन दिखा तो हिरन मार लेंगे और आज बकरी दिखी तो बकरी मार लेंगे, ऐसा नहीं है। डिफाइन योर स्कोप ना, आपको क्या पसंद है, गो फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल लिटिगेशन। कितने लोग कर mm, पाते हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट्स में, देखो कितने अच्छे क्वालिटी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर्स हैं, क्योंकि mm, कॉन्स्टिट्यूशन का टच करने की लोगों की हिम्मत नहीं हो पाती ना, दैट यू आर गोइंग टू सेट द लॉ ऑफ द कंट्री। Then same applies. I'm not just saying only constitutional lawyer is good or bad. mm, People do not, when I say about litigation, how many of you have seen, how many freshers have you seen who say that I will become the next famous consumer lawyer of this country? इतना ज्यादा कंज्यूमर्स के प्रॉब्लम्स होती हैं, 15 रुपए की बॉटल को, पानी की बॉटल को कोई 30 रुपीज में बेच रहा है, कोई 50 रुपीज में बेच रहा है, mm, राइट। एंड देयर mm, कैन बी सो मेनी कंज्यूमर डिस्प्यूट्स, छोटे छोटे लेवल पे ही होंगे, लेकिन कोई बड़ा लॉयर बहुत अच्छे से करता है तो ऑब्वियसली ही विल गेट गुड क्लाइंट्स, राइट। तो हम okay. क्या करते हैं लिटिगेशन में ना, अपना व्यू पॉइंट लिटिगेशन दिमाग में केवल सिविल क्रिमिनल ही सोचते हैं। सिविल क्रिमिनल में भी बहुत स्कोप है, बट Mm, आर वी ट्राइंग टू डू समथिंग डिफरेंट विच द प्रीवियस जनरेशन डिडंट डू? आर वी ट्राइंग टू स्टेप आउट ऑफ द ओल्ड स्कूल फ्रेमवर्क विच इम्प्रेशन जो हमारे दिमाग में है कि लिटिगेशन इज ओनली अबाउट एडजॉर्नमेंट्स। अगर आप केवल एडजॉर्नमेंट्स लोगे तो क्लाइंट्स भी आपको पे नहीं करेंगे ना, क्लाइंट्स पे नहीं करेंगे तो आपकी सैलरी नहीं बढ़ेगी और फिर आप लिटिगेशन को कोसते रहोगे, right? So mm, litigation in itself is actually a very challenging thing. Treat it like people who have an entrepreneurial mindset. When I say entrepreneurial mindset, matlab you are ready and willing to take risk. I tell them that have the guts to go to the court and try litigation for once. It is honestly very very beautiful thing. okay. Okay. Thank you. Thank कॉर्पोरेट you. वर्क में कॉर्पोरेट में तो आई हैव बीन अ कॉर्पोरेट लॉयर, नो डाउट इन दैट, Mm, बट कॉर्पोरेट में यू स्टिल हैव दैट सेफ्टी कि ठीक है यार डेस्क के पीछे काम करना है, कोई इशू नहीं, पार्टनर um, संभाल लेंगे, राइट। तो yes. बी वेरी प्राउड दैट यू हैव had the guts to go and stand in the front of the judges inside the courtroom and then think for something different, चाहे आप बीडी के पर्सपेक्टिव से सोचो, चाहे जिस भी तरीके से सोचो। आजकल तो ऑनलाइन देयर सो मच ऑफ फ्रीलांसिंग वर्क, अगर आपको Mm, कोर्ट में काम नहीं मिल रहा है, साथ साथ यू कैन एक्सप्लोर डिफरेंट थिंग्स एंड ऑल, mm, राइट। mm, 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 mm. Okay. सो या Okay. Okay, thank you so much. So I'll be ending it very soon, very soon. I'll just have just this one last question for you. Last serious question for you. I'll have a very casual last question for you after this serious question. So if you can bear with नो me प्रॉब्लम, just for these two questions. आई डोंट माइंड एक्सटेंडिंग इट आल्सो, बट आई थिंक योर ऑडियंस विल गेट बोर्ड, सो Yes, या actually, because regarding this, you are so young, and most of our target audience will be law students. So या I guess they're already in their own world right now studying law. So they wouldn't want to hear what we are doing in our law life. They would want to hear how much opportunities they have. And you have explained या it to us so nicely, so elaborately. It was so nice to hear. So for that, let's थैंक यू not, सो if we मच, make it more longer and more lengthy, they'll get bored. So let's not make या them bored. Okay. या So just one question I would like to ask you, keeping all these national agendas, national scenarios aside, what scope do we have internationally for Indian law graduates? If you can, because ओके ओके, I guess सो you got my हाँ, question. Okay, या okay. आई डिड Hmm, hmm, when you talk about internationally, hmm, I firstly want to tell you that do hmm, not have an objective
perspective here on this question. Okay. Have a subjective thing that, क्योंकि अगर मैं ऐसे सोचूं ना that I have to step outside India. Now Hmm. outside India there is Canada, outside India there is Singapore, outside India there is Dubai, outside India there is US, Hmm. UK, and Hmm. like so Hmm. many different countries, right? Hmm. Hmm. So do not try to bring all of them together for yourself. Then Okay. again, the same mistake you will be committing, which otherwise you would do when you club litigation as one umbrella, corporate Hmm. as one umbrella, international opportunities as one umbrella, right? Okay. तो Hmm. look for yourself कि मुझे individually क्या जाना. Now still I would try to answer your question Hmm. in whatever objective manner I can. Hmm. It depends. Firstly, Okay. from country to country, ठीक है. Hmm. दूसरा चीज, it is preferable, not mandatory though, but preferable, क्योंकि आपने 5 years इंडिया में ऑलरेडी इन्वेस्ट कर दिए हैं in Hmm. learning common law. Hmm. So even if you're going out, preferably it's better कि आप मतलब उसी पे एडवांस करो. But if you really want to take new challenges of maybe going to US or some other non-common law country, then you Hmm. can. ठीक है. Hmm. Now, when you asked about career scopes, so the new areas like especially data technology side would Hmm. bring you more number of opportunities because GDPR worldwide is expanding. Hmm. एंड Hmm. टेक्नोलॉजी स्पेशली पैंडेमिक के बाद हर चीज ऑनलाइन हो चुकी है. अभी जो छोटे छोटे लॉयर्स भी थे, दे ऑल वांट टू हैव देयर ऑनलाइन प्रेजेंस, दे ऑल वांट टू क्रिएट देयर वेबसाइट्स एंड ऑल. Hmm. बड़ी कंपनीज जो हैं, दे वांट देयर what do I say, engineers to work from home, their staff to work from home. Hmm. 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 But Hmm. because of data privacy issues only, they have to mandatorily call them. And इसीलिए everybody right now is working in this sector. सो टेक्नोलॉजी वाला जो पूरा अम्ब्रेला है Hmm. आउटसाइड इंडिया, उसमें Hmm. बहुत अच्छा स्कोप है. Hmm. देन अकेडमिक वाइज काफी अच्छा आपको स्कोप मिलेगा. कॉरपोरेट काफी, कॉरपोरेट में आपको ये चीज होगा दैट ऑफ कोर्स एक्सपोजर तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, Hmm. लेकिन यहाँ पे इंडिया में 2013 अमेंडमेंट के बाद से आपका Hmm. जो रेगुलेटरी बॉडीज हैं, उनका उन्होंने इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट कर रखे हैं कुछ सेक्टर्स, जैसे आपका Hmm. बैंकिंग हो गया आरबीआई की तरफ से, आपका Hmm. कॉर्पोरेट सेक्टर हो गया सेबी एंड एमसीए की तरफ से. तो उसमें आपका बहुत ज्यादा स्कोप नहीं होता. आपको लाइक आपको एक तरह से कि वही चीज फॉलो करनी होती है जो रेगुलेटर्स कह रहे हैं, राइट. Okay. स्ट्रिक्टनेस बहुत ज्यादा है, तो उसका Hmm. बाहर का काम और यहाँ का काम काफी डिफरेंट होगा. बट इफ यू आर Okay. लुकिंग फॉर, जैसे काफी मेजोरिटी ऑफ पीपल हु कम टू मी, दे से वी वांट टू गो अब्रॉड बट वी वांट टू कम बैक टू इंडिया ओनली. So Okay. I suggest them that go and explore something which you can like to a great extent apply here, right? Okay. अगर आप बहुत नीश में चले जाते हो तो वहां पे आपके थोड़े चैलेंजेस हो सकते हैं. लिटिगेशन वाइज Hmm. कॉमन लॉ कंट्री अगर आप जाते हो तो ज्यादा बेटर है अगर आपके वापस आने के प्लान है. Hmm. बिकॉज small example I'll give you. My friend was arguing at Nainital High Court Hmm. and he was arguing on a very important matter in Hmm. which जो वहाँ के उस समय प्रिसाइडिंग चीफ जस्टिस थे, Hmm. उन्होंने ही उस मैटर को आर्ग्यू किया था, आई थिंक कर्नाटका हाई कोर्ट या सम अदर हाई कोर्ट में, when he was a Okay. practicing advocate, Okay. and Okay. he was challenging the same order in front of the same judge, right? Okay. So Hmm. then because he had done his masters from abroad and he was aware of what was happening in other countries Hmm. regarding that concept, Hmm. he cited them. Then he was asked this question that is this a precedence applicable on us? Hmm. तो he said no your lordship, but obviously जब दुनिया प्रोग्रेसिव जा रही है तो हम रिग्रेसिव थोड़ी जाएंगे, हम सीख तो सकते ही है ना. तो ये Okay. है. देन एंटी ट्रस्ट लॉस, कंपटीशन लॉ, ऑब्वियसली Hmm. बिकॉज हमने काफी हद तक यूरोपियन यूनियन से सीखा है उस Hmm. चीज को. तो उसमें काफी जो आप देखोगे भी जो बड़े बड़े इंडिया के कंपटीशन लॉयर्स हैं, मोस्ट ऑफ देम वेंट अब्रॉड Hmm. either to do masters or to work there for a couple of years, to Hmm. work with sister entry sister firms, and then they came back to practice it, right? तो Okay. इन सब एरियाज में अच्छा स्कोप है. Hmm. एकेडमिक्स, पॉलिसी, इन सब चीजों में तो है ही. Hmm. Okay. So, just addition to this question, is there any scope for continuing your litigation outside of India? Like you have invested 5 years in India already, as you have said, then हाँ. you'll
will take at around 2 years minimum for your masters to be completed हाँ outside altogether. हाँ And then what and if then you want? getting the license. Yes, getting their license, it will take at around 1.5 year more. So, Hmm. what is the scope of like practicing or continuing your litigation outside of India in all those other countries, as you said? Litigation, personally I do not know somebody who did this, Okay, who okay. was इतने बड़े किसी रोडी से मैं अभी तक honestly मिले नहीं, but how I see it is कि Hmm. it would be as challenging as it is in India, क्योंकि Okay. litigation anywhere is like a hunting business, right? Hmm. Hmm. आपकी स्किल्स क्या हैं, आपके नेटवर्किंग स्किल्स, आपके Hmm. बिजनेस डेवलपमेंट स्किल्स, Hmm. एंड आपका किसी से कॉन्वर्जेशन करके उसको नॉट ओनली कन्वर्ट हिम एज अ प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट बट Hmm. ऑल्सो टू एंश्योर डिलीवरिंग दैट लॉयल सर्विसेज विच ही वॉज एक्सपेक्टिंग, सो Okay. दैट वो आपका वर्ड ऑफ माउथ स्प्रेड कर सके, Hmm. राइट? Hmm. बिकॉज कॉर्पोरेट में यू कैन ज्वाइन समबडी, किसी की फर्म Hmm. में, किसी के Hmm. उसमें, लिटिगेशन में Hmm. ठीक है आपने किसी सीनियर को भी ज्वाइन किया, बट अल्टीमेटली सीनियर विल टेल यू द सेम थिंग ना, कि अगर आप क्लाइंट लाओगे तभी आपको शेयर मिलेगा, तभी आपको एक अच्छी सैलरी मिलेगी, राइट? Hmm. तो Hmm. लिटिगेशन टू अ ग्रेट एक्सटेंट, लिटिगेशन में आपका नेटवर्किंग और क्लाइंट बिल्डिंग बिकम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैलेंज. तो इफ यू Okay. आर गुड एट इट, व्हाई वुडंट यू हैव अ गुड स्कोप आउटसाइड आल्सो? Okay. Yes. Okay. एंड ऑल्सो लिटिगेशन, Hmm. मैंने यही बोला कि किस फील्ड में लिटिगेशन में आप जा रहे हो, राइट? Hmm. Hmm. I honestly don't know, and I would really want to meet somebody who Hmm. tried maybe taxation litigation outside India, Okay. राइट? बिकॉज Hmm. टैक्स यहाँ तो सारी पावर अपनी कॉन्स्टिट्यूशन से आते हैं ना, व्हेन वी आर Hmm. टॉकिंग अबाउट Hmm. टैक्सेशन केसेस एंड ऑल, वी Hmm. रेफर टू कॉन्स्टिट्यूशन Hmm. एवरी नाउ एंड देन, Hmm. राइट? सो Hmm. दैट वुड डिफर, वहाँ की टैक्सेशन क्या पॉलिसीज हैं, क्या रूल्स रेगुलेशन लॉज हैं, Hmm. and how it Hmm. is practiced, right? Hmm. At the same time, somebody trying maybe criminal litigation again would have a different approach, Hmm. Hmm. right? So litigation में majorly it will depend on two things. One is the subject you are choosing, Hmm. and specialization, I mean to say, and second is कि आपके personal networking, client building skills कैसे हैं, Exactly. Okay. right? Hmm. Okay. Okay. Thank you so much for all these answers you have given me, all so much time you have invested in giving these answers. So I'm done with all the serious questions right now. It's totally done. Okay. So I just have this one very normal question that what advice would you give to a smart driven college student who is about to enter this real world? Like, what should they do? What should they enter this real world with? What should they think? Like, what should their approach be? Okay, this student is already a college graduate or is Yes, yes, a yes. 12th For example, you student? can very good example you have. You can take me. I graduated this August of this year. I still haven't received Okay, my enrollment number, so you can consider okay, me. I'm asking you what okay. approach should I have? Okay, I'll give a common answer for both school graduates as well as college graduates. Okay. Yes. That whenever you are in a hurry to take a decision, कि अब Hmm. क्या, Hmm. the best thing you should do is take a pause Hmm. and introspect. Ask yourself, what do I really like to do? And this Hmm. is one advice I tell everybody. That law में especially अगर आप if you're planning to have a career in law, Hmm. ask yourself what do I really like to do. If let's say tomorrow all the things, everything under the universe is in my favor, मुझे Hmm. पैसों की चिंता नहीं है, मुझे फेम की चिंता नहीं है, मुझे Hmm. मतलब whatever artificial things I was bothering about, let's Hmm. say everything is in your favor, Hmm. then what would you do? And then when you Okay. have that answer, do that. Okay, Okay. because that thing will give you immense amount of what do I say, contentment. Okay. Happiness is short lived, but contentment आपके साथ रहता है. You get that inner peace, you enjoy what you're doing. And आपने देखा होगा corporate firms में mostly people leave at a very early age. Okay, to the listeners who are listening this, please do not think I have anything against corporate law or corporate lawyers. I have been one and most of my friends are. बट व्हाट आई फील इज कि हम कहीं ना कहीं एक तरह से रैट रेस में दौड़ रहे होते हैं थ्रू Hmm. आउट आवर स्कूल लाइफ, कॉलेज Hmm. लाइफ, एक्सटर्नल Hmm. प्रेशर में इतना ज्यादा खुद को झोंक देते हैं Hmm. दैट वी फॉरगेट टू आस्क आवरसेल्फ व्हाट डू यू वांट.
बिकॉज nobody asked us that from our childhood कि Hmm. तुम्हें क्या चाहिए, हमें बस बताया गया ये करो, साइंस लो, मैथ्स लो, कॉमर्स लो, Hmm. Hmm. ब्ला ब्ला ब्ला, Hmm. Hmm. राइट? सो Hmm. जस्ट आस्क योरसेल्फ नाउ, खाना बहुत पसंद है, Hmm. जोमेटो ज्वाइन कर लो, दे हैव अ लीगल टीम। घूमना Hmm. बहुत पसंद है, जॉइन मेक माई ट्रिप, दे हैव अ लीगल टीम, राइट? Hmm. गेम्स खेलना बहुत पसंद है, जॉइन ए गेमिंग स्टार्टअप, दे वुड हैव अ लीगल टीम, राइट? सो एज लॉ ग्रेजुएट्स यू हैव प्लेथोरा ऑफ ऑप्शंस, अपनी हॉबीज को कंबाइन करो एंड उसमें अपने लिए करियर क्रिएट करो। For example, I told you that I was always inclined towards armed forces. And when I was working in the projects team, procurement का काम जो होता है वो projects team देखती है law Hmm. firms में। तो Hmm. डिफेंस का procurement का काम हम देख रहे थे, and I used to be super excited about those deals कि Okay. कोई इशू नहीं है, इन डील्स के लिए मुझे एक्स्ट्रा ऑफिस में बैठना पड़े, कोई इशू नहीं, मजा आएगा कि सरकार कौन सा हेलीकॉप्टर ले रही है, इसमें क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, कैसे ये होगा, कौन सी कंट्री से आएगा, क्या होगा एंड ऑल, राइट? Hmm. सो इफ यू हैव इंटरेस्ट इन समथिंग ना, नोबडी विल हैव टू टेल यू कि इतने नंबर ऑफ आवर्स काम करो, वो लगेगा नहीं आपको। व्हाई डू पीपल नॉट कंप्लेन लाइक द हैप्पी लॉयर्स, लिटिगेटर्स, हैप्पी इन द सेंस जो खुद से कर रहे हैं शौक से, Hmm. वो कभी नहीं ये कंप्लेन करते कि अरे यार हमें तो इतने घंटे काम करने। बट आई हैव हर्ड कॉर्पोरेट वाले लोग इतना ज्यादा कंप्लेन करते हुए। Why? Because most of them are doing it out of their like not out of their will, Hmm. right? Hmm. Another thing, like you should be very clear about your why. Why are you doing certain thing which you are? Okay. Just ask yourself. Actually, Okay. सारे answers अंदर से ही मिलेंगे. Introspection. That मुझे litigation करना है. Ask yourself, क्यों करना है? What is my answer to why? If your why is very clear to you, na, you Hmm. will not be bothered about who's saying what. डांस में करियर बनाना है, लॉ ग्रेजुएट होने के बाद चलेगा, बनाओ, सिंगर बनना है। यू नो, आई वाज टोल्ड, आई डोंट नो दिस पर्सन, बट आई वाज Hmm. टोल्ड दैट देयर वाज दिस alumni of one of the Hmm. leading NLUs Hmm. who is now a ये हेयर ड्रेसर in some foreign country. Okay. Okay. Yeah. So he just went ahead with what he really wanted to do. हो सकता है 5 साल पहले लॉ में एनरोल करते टाइम यू डिड नॉट गेट इनफ टाइम टू आस्क योरसेल्फ व्हाई डू आई Hmm. वांट टू डू दिस, Hmm. एंड इफ यू आर इन 12th स्टैंडर्ड मे बी यू डिडंट गेट टाइम 2 years बैक टू आस्क योरसेल्फ कि मुझे Yes. 11th में यही सब्जेक्ट क्यों पढ़ना है, मे बी अंडर पीयर Okay. प्रेशर और वट एवर सर्कमस्टांसेस यू Okay. डिड दैट, बट Okay. नाउ you have that maturity and time, right? Hmm. Lastly, before we close, I know everybody is No, getting no, no, late, absolutely, but if absolutely. somebody is here with us for so long, I'll simply tell Hmm. you. I'll give you an example. Hmm. I joined my own, I started my own entrepreneurial journey. Hmm. And meanwhile, I had a conversation with one of my old friends Hmm. and who is working with a law firm. So the Hmm. person told me that I just asked, like, what is the package you guys are at right now? Hmm. And they said we've reached somewhere between 18 to 20 lakhs. Okay. Okay. Hmm. And the first thought I had was, oh shit, had I been in the corporate, I would have been making 20 lakhs a year by now. For 3 years almost, I have had a loss of maybe, prospective loss of maybe 40 to 60 lakhs, right? Hmm. And then Hmm. suddenly I asked myself that, Samanika, why did you start this journey of being a mentor? And then I opened my starred messages, and I had so many people sending me messages during pandemic saying we got a job, we got an internship, thank you so much, talking to you gave us clarity in life. And I was like, this is exactly why I did what I did. So Hmm. even though I may not have earned so much of money, but I'm happy, I'm content doing what I'm doing, right? So if you know your why, you will not be affected by external forces. So that's Okay. the only advice. Okay. Okay. That was really something I needed to hear. That is really something everyone needs to hear right now, because mentally, students right now are not at peace. I can tell you that. Being a student right now, I have passed out, so we are not at peace because we are not getting opportunities as our seniors used to get before pandemic. So things are at a very hazy phase right now in front of our eyes. So that's why all the words that you said, all everything that you said, we'll be uploading this in our podcast. These are words of wisdom. These are so inspiring for us, for me especially, for each and every law graduate of this country. And we'll try to make this podcast. This will be available in Spotify nationally and internationally. So we hope to spread it as much as we can, because these words of wisdom really matters to me.
and I'm sure it will really, really, really matter to all our target audience, especially the students who are studying law, who are in their fourth year or fifth year, or who are in their 12th standard. They want to pursue law, but they don't know if they have ample opportunities to if they pursue this career. So all that you said today matters a lot to us, a lot to our viewers, a lot to our listeners. Thank you so much. Ankit, I'll just add one thing here because Okay. again, you said something which will hit a lot of people, where Okay. you said that we are not getting as many opportunities as our seniors did. Again, Hmm. this is a very myopic viewpoint. You need to Okay. correct because just do not see this as firstly कि seniors को क्या opportunities मिली. You guys are Okay. the generation which has the option of using LinkedIn, where you Hmm. can network like on the click of one button. You can Hmm. directly reach out to a law firm partner. We didn't have Okay. that option. पहला चीज. Okay. दूसरा Okay. चीज, that the number of seniors you had who've already Hmm. passed out from your colleges, Hmm. who've already graduated and are working, Hmm. they all are looking for juniors, right? तो Hmm. उतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है. पहला चीज, इस चीज को उस तरीके से सोचो. ये मत सोचो Okay. that seniors have taken away all the slots. No, Okay. they all are looking for their juniors, na? सबका. Hmm. Lastly and most importantly, भीड़ में जा ही क्यों रहे हो? Why don't you try to stand out? If you think that opportunity एक जगह नहीं मिल रही, create opportunities for yourself, ना? Okay. Give employment to other people if you can. Like set up something like that. Because there's so much scope of improvement in every single sector. And you can start from there. I have chosen to take career mentorship in the field of law as one option. Hmm. Somebody else might take and have maybe teaching practical learning, uh, practical side of law, right? So just look at the things कि क्या क्या चीजें improve करनी है, and then fill those gaps. So you will be able to create opportunity for yourself and for everybody else. Okay. Don't wait Okay. for that मसीहा, कोई आएगा आपको चीजें हाथ पे देगा. Maybe you can be that मसीहा for somebody else. Okay. That's Okay. अब इससे ज्यादा मैं ज्ञान नहीं no, no, दूंगी. no, no, no. It's not Otherwise, about the gyan. It's like an eye-opening conversation I had with you because it's like it was really like talking to a very old friend of mine. So you were so, what should I say? Not casual, but you have opened your heart to us. I have opened my heart to you, and you have told us everything that I was going wrong in my life, my thinking, my method of thinking. I was going wrong in so many things, and those were so important. I was thinking it in a different way. You told me that you shouldn't think it in this way, think it in that way. And right now, I can just even thinking for 5 seconds, I'm literally seeing something different, something bigger. So hope I can work in that, and I hope all our listeners will be so glad that we could get you, and we are honored to have you here with us. And thank you so much for giving your prestigious time to us, to Calcutta as long Lawyers. as as long as we are able to impact even one life, I think Yes. we this session will be successful. Thank you so much to your Thank entire you. team for reaching Okay. out, Okay. and thank you Thank everyone you for so much. listening Thank you. and being I with us. really hope to be in touch with you because right now Yeah, we yeah, need sure. that. I need that. Okay. Yeah, Okay. sure. It was really good talking to you. It was really good. Thank you for giving Thank us you. your Thank you, time. sir. Thank you so much. Thank you so much.